I'm not saying that you should not do that. But today, let's explore more deeper on what exactly do we mean by owning our life. And a lot of philosophers says that we have to own your life, we have to own your ages, own your years, and own your months, own your day, and own your hour. So let's say if you want to own your life, so how are we owning this hour at consciously positive? If you're owning an hour at consciously positive, what exactly is required is your full participation, whether you are participating off video or whether you're participating on video or in the chat box. If you are committed to give your 100%, you are on the path of owning your life. And what exactly is owning your life? It all happened about 14, 13, 14 years ago when I was going through some bad phase. Not a bad phase, but some interesting or extraordinary situations in my life where I practically was having nothing in my bank account. And my health was deteriorating day by day. I was already 44 years, 33 years of age at that point in time. I'm 51. That was 8 years ago, sorry. Now, I was wondering, nothing in the bank account, going through midlife crisis. What's happening here? So that made me contemplate a few things. Of course, by God's grace, I have accomplished a lot of things, but I could not accomplish in many, many years. But that's not the point. Point I'm trying to make is 8 years ago when I really started contemplating about what exactly in your life, I realized that when we are small, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास टाइम बहुत होता है. We have enough and abundant of time, and we have wonderful health, but we don't have money. We were dependent on parents, and we're dependent on someone else to really feed us, to really fulfill our desires. And as we progressed, as we started getting educated, academically oriented, as we learn through life, we do our jobs, we sacrifice the time, and we also sacrifice our health because we want to really grow. This is what our program is all about. कभी लोग बोलते हैं कि यही टाइम है काम करने का, काम करो, पूरा काम करने से कोई बीमार नहीं होता. So this kind of stuff we used to listen to from everyone, and then we sacrifice our health and time to earn money and to go ahead and do whatever we want to do. But हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमें जिंदगी में चाहिए क्या. हम सिर्फ भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं. Normally that happens. Purposeful life भी होती है लोगों के लिए. देखा गया 90% people live a purposeless life. So after spending a lot of time and sacrificing health to get to that stage of earning money and acquiring wealth, we reach at a place जब हमारे पास टाइम भी होता है, हमने प्रॉपर्टीज भी बना ली होती हैं, हमारे पास पैसा भी होता है, हमारे पास कुछ पैसे आ भी रहे होते हैं, पेंशन के पैसे आ भी रहे होते हैं, जॉब करते हैं कुछ लोग तो, पर हमारे पास हेल्थ नहीं होती है एंजॉय करने के लिए. We don't have good health to enjoy our life. So is it really a utopian dream where all the three things like time, money, and health come in one line? Is it possible? आज हम जहां भी हैं, किसी भी जगह पे हैं, wherever we are there in our lives, whether we are 20, 30, 40, 50, 60 or 65 or 70 also, are we still living a life where we are just moving ahead or doing unconscious things, or are we really committed to really take charge and own your life? Now, I'm not here to talk about all those motivation rah that yes, you are the owner of life, you can do that, you can do this. The fact of the matter is, no matter what you listen, that yes, you are the owner of life, is your heart really setting, is am I having good health right now? Or am I having good amount of money in the bank account? Or do I have good and little time or more time, wherever stage of our life are? कि हमारे पास वो पैसा है और वो टाइम है जो उसको एंजॉय कर सकते. तो करना क्या है? नाउ आई really talked about the problem statement. तो करना क्या है?
So before I go ahead, whosoever are there listening here, whether on Zoom, offline, or Facebook, can you put it in the chat box? Or you can just unmute yourself and just start talking about what exactly is your definition of owning your life. आपको कब लगेगा कि yes, मैंने तो आपको बता दिया अपनी definition. आपको कब लगेगा कि yes, आज मैं अगर मेरे को ये मिल जाता है, if I get this in my life, I will clearly and confidently say that yes, I am owning my life. I'm really taking charge of my life. So who would like to begin and start sharing? Whether in the chat box or come on video, and unmute yourself. If you want to come on video, that's fine. In 40 minutes, I'm not going to push you to come on video if you want to come on video. If you want to come on video, that's full participation, that's fine. But what exactly do you really mean by this topic? And yes, I am ready to take the charge of my life and all that. So who's going to start? Who's going to share? Who's going to talk about? Who's going to put in the chat box? आपको क्या लगता है? Yes, owning my life में मुझे क्या समझ में आता है? और आज अगर पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो my promise to you that at the end of 30-40 minutes आप कुछ ऐसी डिस्टिंक्शन लेके जाने वाले हैं जो कभी भी आपको नहीं मिली है. आपने बहुत किताबें पढ़ी होंगी, बहुत समझ आया होगा आपको, but I would be sharing my own experiences, some real framework that you're going to take away from today. If you participate well. If you don't participate well, you still get an information download, which is not going to help you much. But if you really participate and share your experiences, this will really help you. So who's going to share? Who's going to talk about? Basant, Usha, Kailash, Riya? Who's going to talk about? Uma? What exactly do you mean by owning your life, taking charge of your life? आपकी जिंदगी में आज की तारीख में आपको क्या चाहिए? I think I can start maybe. Yes, please go ahead. So it is owning, for me, owning my life would mean like when I choose something or decide something to do, I get to do it completely and in my own way. So that is owning my life. Okay. So जो मैंने सोचा है, whatever I decide, if that happens, and talks about owning your life. But Shabana, does this really happens? क्या जो आप सोचते हो क्या वो वाकई 100% हो पाता है? अब सवाल वो भी नहीं है कि अगर आप सोचते हो क्या 100% होता है. The question here is, have we really sat down and decided what is really I want in my life? जैसे मुझे लगता है कि मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे रिलेशनशिप अच्छे चाहिए. तो क्या do we really figure out and go and delve deep down to really understand what exactly do I want in that? I want to expand my business. Okay, fine, that's fine. I already have that great health. तो उसमें मुझे exactly क्या चाहिए और क्यों चाहिए? क्या ये सवाल आता है? That is the first and second foremost thing. So thank you for sharing. Anybody else would like to share this? One more person, and then I'll give the framework to you today. Anything that you want to share? All listeners. It means taking 100% responsibility of your life, and like whatever the consequences are, you know how to react to it, and you know how to adjust to it instead of blaming someone or instead of blaming the situation. You own your life and you take 100%. Like you feel powerful with it. Like not powerful as in "Okay, I am only the god" or something. Yeah, Punish Bhagwan kinds. But you feel powerful that that you feel that okay, your thoughts only get real situations, so you change your thoughts and you change your patterns. Yeah, definitely. And that is the behavior, that is the attitude, that is the thought process, and that is something that you really are. If you're showcasing that, yes, I am taking 100% responsibility to where I am. And once you have that attitude that मैं अपनी जिंदगी का चार्ज ले रहा हूँ या ले रही हूँ और 100% जिम्मेदार हूँ, then you begin your journey.
until and unless you take 100% responsibility, आपकी जर्नी शुरू ही नहीं हो सकती है, क्योंकि आप चाहते हो, आपके ड्रीम्स होते हैं, आपके डिजायर्स होते हैं, आपके ड्रीम्स एंड फैंसीज होते हैं, और फिर समथिंग हैपेंस, कुछ और होता है, फिर कुछ और होता है, तो आप अपने ड्रीम्स को छोड़ देते हो, फिर बोल देते हो कि इसकी वजह से ऐसे मैंने छोड़ दिया, इसकी वजह से मैंने काम किया, इसकी वजह से ऐसा हुआ. I would have done great things in my life if and only if my wife had supported. I would have done wonderful things if and if my husband had supported. If my kids would have supported, if I have not have done that, if we would have done that, तो ये जिंदगी में मुझे मिल जाता. तो जब ये वाला एटीट्यूड होता है तो हमारी जिंदगी में 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात नहीं होती है. But yes, as Shabana has said, कि जैसे if I decide what I really want, if I get it, I'm really taking charge of it. But what if you don't get it? What if it is coming to your way? Let's आज आप decide करते हो, आज आप एक seed डालते हो, और आपको लगता है कि वो चीज मेरी जिंदगी में आ रही है, और सडनली कुछ और हो जाता है, तो क्या करते हो आप एज अ फार्मर? Do you go away from that ground or you stay at the ground? And when you take 100% responsibility, you stay at the ground as a farmer. When you put the seed here, कि मुझे ये चीज चाहिए, तो आप ग्राउंड पे सेट करते हो. I actually hail consciously positive organizers जो कि 2020 से every day they are hosting this show. Hats off to Shabana and the team. They're hosting this show because they have a vision in their mind. हर रोज कुछ ना कुछ gospels या कुछ ऐसी चीजें देनी जिससे लोगों का दिन बहुत अच्छा जाए. तो सीड्स डाला, रिजल्ट कुछ भी आया, मुझे नहीं पता क्या रिजल्ट आया, लेकिन मैं वहां पे खड़ी हूँ क्योंकि उससे इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है मेरी जिंदगी में और लोगों की जिंदगी में. वो स्केल अप करने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, बड़ा कोई करने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, बड़ा सोचा जा सकता है, पर एटलीस्ट जो इंटेंशन ये है, यस, सुबह हर रोज करना है, प्रैक्टिस रोज करनी है, दैट्स इम्पोर्टेंट. सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. यस, taking 100% charge, taking 100% responsibility to whatever my intention is. But let me just take you beyond that. What exactly do you really want in your life? Now put it in the chat box. Take the first step of owning your life. And that is a practice that if you do it today, you will remember it for a lifetime. So what exactly do you want in your life right now? Just take 2 minutes and talk about it, think about it, और बोलो कि क्या जिंदगी में आपको चाहिए आज. एग्जैक्टली क्या चाहिए? जो चाहिए आपको देने के लिए तैयार है यूनिवर्स, जहां पे भी आपको, पर आप बताइए आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए. एक रिसर्च ये बोलती है, there's a huge research says people say that I'm not getting what I really want in my life, but उनने कभी ये कॉन्टेम्पलेट ही नहीं किया कि उनको एग्जैक्टली चीज चाहिए क्या है. It's like a person who is always complaining to God कि मेरी लॉटरी नहीं लग रही है, मेरी लॉटरी नहीं लग रही है, I'm not getting any gifts and lottery. And एक दिन भगवान प्रकट होकर के बोलता है कि भाई तू टिकट तो खरीद ले, तो लॉटरी नहीं लग रही है तो मतलब क्या तेरे पास टिकट तो है नहीं, तो क्या खरीदेगा. तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या हमने ये विजुअलाइज करके या प्रॉपर पक्का किया है कि मुझे चाहिए क्या? What is that I really want in my life? So put it in the chat box if you are very clear that this is what I want in my life for the next 3-4 years. मेरी जिंदगी में मुझे ये चाहिए, 3-4 साल में मुझे ये पक्का चाहिए. किसको पक्का स्पेसिफिक पता है? चैट बॉक्स में बताइए. अगर पता है तो बताइए, और क्या पता है कि 3-4 साल में क्या होने वाला है आपकी जिंदगी में. वो देखो जो होगा वो हमें भी नहीं पता, वो एक फिर देन भी अगेन कम टू अ स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन, हाउ विल आई नो दैट मुझे क्या मिलने वाला. बट एटलीस्ट आपकी इंटेंशन है कि नेक्स्ट 3 to 4 years में. Why I'm sharing 3 to 4 years? Because when you don't put a timeline, then our mind goes crazy. But even if you think कि मुझे 3 से 4 साल नहीं बताना है, पर अगर आपने क्लियर है कि मुझे जिंदगी में ये चाहिए,
मुझे टाइम चाहिए अपनी फैमिली के लिए, मैं 4 घंटे काम करना चाहता हूँ पूरे हफ्ते के अंदर, और मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूँ, क्या मुझे ये चाहिए? 4 साल के बाद मेरी पोजीशन क्या होगी, मेरी हेल्थ क्या होगी, मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा होगा, मेरे रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, मेरे फैमिली फ्रेंड्स कैसे होंगे, मैं कहाँ पे होऊंगा, मैं इंडिया में रहूंगा, मैं बाहर रहूंगा या बाहर रहूंगी, मेरा एजुकेशन लेवल क्या होगा, मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ, मेरे आसपास के लोग कौन होंगे, मैं किससे मैं ग्रीट कर रहा हूँ या कर रही होंगी रोज कंसिस्टेंटली, मेरी एजुकेशन लेवल क्या होगा, क्या एग्जैक्टली हमने क्लियरली लिखा है? और अगर नहीं लिखा है, कैन वी डू इट राइट नाउ, जितना भी समझ में आता है नेक्स्ट 2 मिनट्स? What is that you want in your life in terms of physical, mental, social, financial, and spiritual? I know it's not easy to write in 2 minutes if you haven't written earlier, but अभी किसी को अगर पता है तो वो लिख सकता है. So put it in the chat box or unmute yourself. What thoughts are coming your way, except for Ria or शबाना? कोई और बोल सकता है क्या? चैट बॉक्स पे लिख सकता है या बोल सकता है कि what exactly do you want in your physical, mental, social, financial, or spiritual phase? Anybody would like to share? Anybody like to talk? Good morning, Vinay. Good Good morning. Good morning. morning. Thank you for joining me, Ji. Yeah. Yes, please go ahead. So my wish is not a physical one. I just want to master my mind more, master my emotions, not behem acham. So that is what I would achieve. Okay, master your mind. When you say master your mind, what exactly is that you can visualize in the specific way? Like go into deeper state of meditation because mind has a way of wavering here and there. So you cannot remain focused all the time. So that is what I want to achieve. Right. So Stability of mind. I really understand that. But for the sake of more clarity, if you can share what is happening when that state is achieved. Like आपने बताया कि stabilized अवस्था होगी या stabilized position होगी. So when you are mastering your mind, maybe you have mastered mind in the next 3, 4 years, what is happening around you? What is going to happen? What are you doing? Who you are meeting? किसके साथ होंगे? आपके आसपास के लोग कौन होंगे? आपकी फैमिली में कौन होंगे? So this is something I have to work on my own because others Joe around, they are triggers. They trigger those baser emotions. So we need to be aware of that and try not to get triggered. So that is where the mastery of the mind comes in. Okay. 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 All right. All right. ठीक है. This is what you want in the next 2 to 3 years. So let's go to the next level. So when you see that this is going to be that state, so what is the purpose of it? Why do you want this state? उसके पीछे reason क्या है? क्यों आप ये चाहते हो? Maybe someone else can answer, or you can also start looking at it. Why do you want it? ये mind की mastery क्यों चाहिए? To get deeper into spirituality. Okay, so why you want to get deeper into spirituality? Because that is what gives me peace of mind. Okay. So my question to you is, peace of mind, is that what you exactly want? Right. Right? So this is something that you really want, peace of mind. अब उसके लिए practices different हो सकते हैं. अब now, when you say that, yes, I have achieved that state कि यार मेरी mind की mastery पूरी हो चुकी है, तो क्या ये practically possible हो सकता है in our journey? Not at all. Very monstrous. Right. So let's go more practical into it कि जब ये माइंड की मास्टरी हो रही है, वो जर्नी है 3 से 4 साल में, तो मैं कोई एक रियलिस्टिक गोल देख सकती हूँ क्या कि हाँ, आज जहां पर हूं मैं और नेक्स्ट 3, 4 years में where I would be, definitely there is a huge evolvement that I really want in my life, where I am closer to minding, mastering my mind. But what is happening around in my physical space, in my health space? But when I have that peace of mind, that is when I also have my mind, mastering my mind. There's something which is happening. No,
आसपास के लोग भी ट्रांसफॉर्म हो रहे होंगे, आपको उसको बात कर रहे होंगे, आपके फिजिकल स्पेस में आपके पास कुछ अबंडेंस भी आ रही होगी, रिलेशनशिप्स में भी कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होंगी, कुछ तो नजर आ रहा होगा ना आपको जब ऐसी सिचुएशन होगी, जब हम उस 3-4 years में आएंगे. तो माई इन्विटेशन टू यू इज, कैन यू स्टार्ट लुकिंग एट दैट सिचुएशन ऑल्सो, कैन यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग दैट ऑल्सो. When I am mastering a mind, there is a certain behavior that I am going to consistently express and portray for myself. मेरा एक सर्टन बिहेवियर होगा अगर मैंने मास्टरी ऑफ माइंड. आज मेरा एक सर्टन बिहेवियर है कि मेरी पूरी मास्टरी ऑफ माइंड नहीं है, एक सर्टन लेवल है, पर आफ्टर 3-4 years एक लेवल बढ़ेगा तो कुछ मेरा एक्सप्रेशन चेंज होगा. So my invitation to you is, and to everyone is, can you just visualize what was happening around, what is going to happen around in 3-4 years? क्या नजर आ रहा होगा आपको? So should I answer? Somebody else would like to answer. या आप और कोई आंसर नहीं कर रहा, मुझे तो पता भी नहीं है कि यहाँ पर कोई खड़ा भी है कि नहीं है, क्योंकि सब लोग अंधेरे में ही है और कोई बोल भी नहीं रहा चैट बॉक्स पे. तो आई डोंट नो, यू आर द ओनली वन लुकिंग एट इट, लेट मी जस्ट टॉक टू यू ओनली. So what happens is when I get triggered, so I become reactive. So when I calm myself down, when I'm going into that space of mastering my mind, I will react less. So जो आसपास की strife जो है वो कम हो जाएगी. Yes. So there will be more peace in my surroundings, which will contribute to my peace of mind. Yes. Yes. Okay. So let me put it in another way. कि मैं बोल रहा हूँ कि next 2 years में बहुत fit हो जाऊंगा. अब completely मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ कि I will be completely fit mentally and physically both. अब मेरा उसका मेजर क्या होगा? मेरा बॉडी मास इंडेक्स क्या होगा? मेरा वेट कितना होगा? मैं अगर ऐसा कर रहा हूँ तो मैं ज्यादा मेरे को एनर्जी मिलेगी तो मैं पैसा कितना कमा रहा हूँ? आई एम जस्ट शेयरिंग, मे बी इन योर केस कुड बी डिफरेंट, बट व्हाट वुड बी द एक्सप्रेशन ऑफ दैट? आपका पीस ऑफ माइंड अच्छा होगा, आसपास के लोग अगर अच्छे आस पास बात हो रही होगी, तो फिर उसका रिजल्ट क्या हो सकता है? क्या we'll be in a more joyful state of mind. That's fine. Optimal health, क्योंकि Yeah. triggers नहीं होंगे, mind परेशान नहीं होगा, तो health will also be fine. That's right. That's right. But अब क्या होता है कि अब उसको हम मेजर कर सकते हैं क्या कि हाँ? No, there is no measurement for it. Exactly. That is my invitation to everyone is, if I know it is going very difficult for us to measure. So जो the law says, the thumb says, whatever cannot be measured cannot be accomplished. I'm not saying that would not accomplish, but आपको पता ही नहीं होगा. It's like, sailing in the sea, और आपको पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है exactly, तो आप कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे. ऐसा तो है नहीं कि पहुंचेंगे नहीं, right? आपकी प्रैक्टिस होगी तो पहुंच ही जाएंगे. So take some time and just find out कि 5 areas में exactly क्या देख रहे होंगे. आपका घर में क्या होगा, आपकी फैमिली में कौन होगा आपके साथ. Let's say अगर आपकी mental peace of mind होगा, तो उस समय definitely there will be different set of people that you will be talking, right? You will be contributing. Maybe you have people around उनको आप ट्रेन कर रहे होंगे या उनको कोच कर रहे होंगे या उनको सिखा रहे होंगे. मे बी आपकी जो हीलिंग प्रैक्टिस है एक डिफरेंट लेवल पे होगी. मे बी आप के रिलेशनशिप्स में एक नया जोश होगा. तो वो एग्जैक्टली आई वुड लाइक यू टू विजुअलाइज. इट इज नॉट ईजी, बट आई एग्जैक्टली वुड लाइक टू विजुअलाइज. अपने माइंड को एक प्रोग्राम देना है कि हाँ, ये एग्जैक्टली ये चीज हो रही है. एग्जैक्टली मैं इन चीजों को देख रहा हूँ मेरे फैमिली में, मेरे रिलेशनशिप्स में, मेरे पैसे, मेरे को बैंक अकाउंट. नो, दिस इज ऑल्सो अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. हमारे पास पैसा भी हमारे को चाहिए ना. हम लोग बोलते हैं कि हमारे को पैसा तो आउटकम है, लेकिन अगर हमारे पास मान लीजिए आज की तारीख में 5 करोड़ रुपीस होता है, 5 करोड़ होता है, और उसको मैंने FD में डाल दिया या इंटरेस्ट बैंक में डाल दिया, और मेरी हर रोज की पैसा उस वहां से आ रहा है और मैं जिंदगी को अच्छे से जी रहा हूँ, मुझे पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो वो भी तो हमारे को चाहिए. अगर मेरा पीस ऑफ माइंड होता है, अगर मेरा मेंटल ट्रिगर नहीं हो रहा है, तो क्या मेरी और मेरे आसपास के फैमिली के मेंबर्स की, क्या या मैं वो भी मैं चाहता हूँ तो उनकी इनकम में वृद्धि हो रही है क्या? वो भी विजुअलाइज क्या कर सकते हैं. सो वेरी स्पेसिफिक, मेजरेबल, व्हाट कैन मेक मी
completely fit, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा body mass index 24 हो जाता है, तो then I'll say I am fit. मेरा weight अगर 69 हो जाता है, I'll say I'm fit. When I work 18 hours a day, खुशी से, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं fit हूँ. जब मैं 6 महीने तक बीमार नहीं पड़ रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि मैं fit हूँ. That is specific, measurable. So take your time, but this my invitation to everyone is to really look deeper into very specific thing. क्योंकि जब हम स्पेसिफिक देखते हैं तभी तो हम जिंदगी का चार्ज ले सकते हैं. हमें पता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें एग्जैक्टली पता होगा कि हाँ टुडे एंड टुडे एंड आज हम यहाँ पे खड़े हैं. तो मेरी यू टेक योर टाइम, नो हरी, बट दिस इज एन इन्विटेशन टू एवरीवन. If we are very specific, then we can say, yes, आज मेरा level 20% accomplish हो गया, आज मैंने 10% accomplish किया, आज 30% accomplish किया. So it is where I really want you to just start looking at. And that is a mistake that a lot of people do. कि हम लोग specific measure में नहीं कर सकते. अब वो चीज होगी नहीं होगी हमें नहीं पता, पर मेरी intention है that in next 3-4 years, I have at least 5 CR wealth in my bank account. अब मैं बड़ा ही ऑडेशियस गोल ले सकता हूँ, हो सकता है होगा, हो सकता है नहीं होगा, मुझे नहीं पता, पर मेरी इंटेंशन बहुत ही क्लियर है कि मेरे बैंक अकाउंट में 5 करोड़ की वेल्थ मिनिमम होगी. दैट इज माय पर्सनल वांट. अगर मेरे पास 5 CR की वेल्थ होगी तो मैं पैसों के लिए काम नहीं करूंगा. मेरे को घूमना है, मुझे जाना है, मुझे लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ माय, मतलब मुझे पैसों की चिंता करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मुझे जिंदगी में कंट्रीब्यूट करना है तो किसी को. मेरे को एक्सप्लोर भी करना है. आज मैं आई केम फ्रॉम यूएस, आई स्पेंड मैनी लैक्स ऑफ रुपीज. तो मैं जानता हूँ कि अगर मुझे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है तो मुझे बहुत सारा पैसा बैंक अकाउंट में चाहिए. बिकॉज दिस इज व्हाट आई रियली वांट माय लाइफ. owning my life is not worrying about my time, not worrying about my health, and doing what I really want in my life. So in my case, in the physical space, I really want a minimum 5 CR of my hard work. ये मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, आप भी अपने बारे में सोच सकते हैं क्या हो सकता है. Anybody would like to share before I go ahead? कुछ और बताना चाहता है, किसी को समझ में आ रहा है, किसी को कंफ्यूजन हो रहा है, वो भी बता सकता है. Meenu ma'am has already shared, like she wants, I mean, with mental peace and mental evolution, and that can, and like she just wants to be triggered by people and like wants to, like what I could get from her talk was like to get ahead in a spiritual path. So similarly, I guess that cannot be measured, but that's like the goal for most of us, because I mean that's important to keep as a goal, because ultimately the like going a little deep in this, everyone's intention is moksha, and ultimately that that is what we have conditioned, and that is what, if you look at the 8 limbs of yoga also, so that's what is said. So I guess she's just walking one step ahead. Yes, that can be measured, but she can all, but suppose if she gets triggered at 60 things, I mean she's not like that, but just giving a random example. So like if she's getting triggered at 50 things, like she can count it like that, like not just she. I think this is a very important goal, I realize, because because I also get triggered by people and like the way they react. So and I also, so I think that's a very important goal to keep generally, I'm saying. That's fine. I'm not saying, I'm not denying it, Rhea, that cannot be your intention. That is definitely your intention. But the purpose of this activity today is also to have more clarity what exactly is happening. मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा mind 20% trigger हो रहा है, या 10% हो रहा है, या 5% हो रहा है, या 20-50% हो रहा है. That's the key point. जैसे मेरी भी इंटेंशन ये है कि आई ऑल्सो वॉन्ट इन माई स्पिरिचुअल स्पेस, जो मैं स्पिरिचुअलिटी चाहता हूँ, मैंने फिजिकल स्पेस में बोला आपको, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में मैं क्या चाहता हूँ कि आई वुड डेफिनेटली बी एट अ स्पेस, और आई वांट टू बी एट अ स्पेस नेक्स्ट 3-4 years, जहां पे मैं हूँ 40 से 50% बेटर हो जाऊँ, जहां पे मैं ट्रिगर होता हूँ, जहां पे मेरा माइंड हिल जाता है, तो मैं 40 to 50% ज्यादा बेटर होगा. ये मैंने मेंटली सोचा. और अच्छा वैसा होगा, if that happens,
then my other areas are also impacted. It is going to be acting as a springboard, right? So that's the point I'm trying to make it is, can we make it measurable? Can we specifically see that? Because our mind will not visualize. क्योंकि हमें इस जर्नी में 4 साल की 5 साल की जर्नी जब हम जा रहे हैं owning our life की जर्नी में, we want to have our mind as a companion. हमारा माइंड एक कंपेनियन की तरह काम करेगा, और अगर माइंड को बहुत क्लियर डायरेक्शंस देते हैं, बहुत स्पेसिफिकली बताते हैं, तो माइंड हमारी हेल्प करता है. अगर माइंड को बोलते हैं कि मेरे को ट्रिगर नहीं होना, मेरे को ऐसा नहीं होना, तो माइंड को वो समझ में नहीं आता एक्चुअली दिस इज. और अगर हमें माइंड का सपोर्ट चाहिए अपनी जर्नी में, तो हमें स्पेसिफिक बताना होगा. ऑफ कोर्स आप एज यू प्रोग्रेस यू कैन एक्चुअली हैव मोर स्पेसिफिक थिंग, बट स्पेसिफिकली बताने में क्या हमें स्टॉप कर रहा है, दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव टू लुक एट. व्हाट एग्जैक्टली स्टॉपिंग अस टू बी स्पेसिफिक इन आवर लाइव्स? दैट इज द फर्स्ट स्टेप. Okay, what do we really want in life? Second step is why we want it. मुझे क्यों चाहिए इसके बारे में समझना. We have less time right now. I'm just giving you a framework. You can contemplate it later, but I'm just giving you a framework. So first is what we want. Second is why we want. And the third is where exactly where we want to be. हम कहाँ पे होंगे, हमारे आसपास के लोग कौन होंगे, किससे बात कर रहे होंगे कंसिस्टेंटली. अगर 3 से 4 साल में अगर मैं जिंदगी में को ओन कर रहा हूँ, जैसे मैं अपने बारे में बोलता हूँ कि अगर मैं जिंदगी को ओन कर रहा हूँ 5 साल के बाद, तो मुझे अगर लगता है कि मेरा मन कर रहा है कि मुझे पेरिस में जाके ब्रेकफास्ट करना है और वहां से वापस होके आना है, मैं सोचूंगा नहीं, टाइम के बारे में नहीं सोचूंगा, पैसे के बारे में नहीं सोचूंगा. मेरे पास इतना पैसा बैंक अकाउंट में होगा कि इफ आई डिसाइड टुडे आई वांट टू गो टू पेरिस एंड हैव ब्रेकफास्ट देयर एंड कम बैक, आई विल डू इट. दैट इज व्हाट आई मीन बाय ओनिंग माय लाइफ. If I want to attend a family wedding in the US, तो मैं 10 साल की वेट नहीं करूंगा जैसे मैंने पहले वेट किया. 9 साल की वेट नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा. शादी है तो चला जाऊंगा. That is what I mean by own my life, right? If I, and I'm not very worrying about my health also. Of course मैं अचीव कर सकता हूँ 50-60 साल में, लेकिन उसकी वेट नहीं करूंगा. So that is what I mean by owning my life. ठीक है, तो मेरे आसपास क्या हो रहा होगा, मेरी फैमिली सिचुएशंस क्या हो रही होंगी, that is something I really want to invite you. उसके बाद what can stop you? Once you understand why we want, where we want, who we are with people, then what can still stop you? What are the circumstances that can stop you? Is this going to be your family, your friends, your relatives, or your own self? क्या रोकेगा आपको कि मुझे जिंदगी का मालिक बनना है और own my life? What is the obstacle that you're looking at? What is the key obstacle that you're looking at? So a lot of people today in this session would feel कि यार ये क्यों मेरे से पूछा जा रहा है, इतने सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं. But this is a mindful activity that I want you to contemplate, because हमें contemplation नहीं करना, हमें सिर्फ जिंदगी में मूव करना है. जो सामने आ रहा है उसको देखना होता है. हम contemplate नहीं करते हैं, इस वजह से कई चीजें हमारे को नहीं मिल पाती. हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे I want to just relax, I want to have a flow of my life, जैसा चल रहा है वैसा चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा. वो भी लाइफ अच्छी है, पर मुझे लाइफ कौन सी चाहिए? I'm talking about my personal life. जहां पे कंसिस्टेंटली कॉन्टेम्पलेट हो रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पूरा पर्पस ढूंढ रहा हूँ, मेरे को समझ में आ रहा है कि व्हाई एम आई हियर ऑन दिस अर्थ, मैं वो भी पर्पस ढूंढ रहा हूँ. दिस इज माय स्पिरिचुअल गोल. तो सेकंड पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट what are the key obstacles that will stop you to accomplish what you want to accomplish? यहाँ पे बहुत लोग जो सिर्फ सुन रहे हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो लोग कर रहे होंगे अपने लेवल पे, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता. देयर इज नो विजिबिलिटी, देयर इज नो वीडियो हियर, देयर इज नो चैट बॉक्स हियर, आई डोंट नो. आई एम नॉट ब्लेमिंग देम. दिस इज हु you want to choose your life today. Okay, आप चाहते हो आधा घंटा मुझे ऐसा देखना है, सिर्फ सुनना है, that's okay. The point I'm trying to make is what will stop you to own your life. पहला, अगर आपको बहुत ही क्लियर है कि मुझे जिंदगी में ये चाहिए, तो फिर स्टॉप क्या करेगा? हो सकता है कि आपका बिलीफ स्टॉप कर सकता है, हो सकता है कि ये कॉन्वर्सेशन स्टॉप कर सकता है कि ऐसे थोड़ा पॉसिबल हो जाएगा कि मैं जो चाहता हूँ वो हो जाएगा. गॉड विलिंग होगा ना? हाँ, ऑफ कोर्स गॉड विलिंग होगा, पर गॉड विलिंग में क्या कम होता है या ज्यादा होता है? गॉड विलिंग में तो बहुत ज्यादा होना चाहिए ना.
आपने जो सोचा अपने लिए, whatever you thought about yourself, universe has much more to give to you. आपने आपके लिमिटेड माइंड ने बोला होगा मुझे सिर्फ 5 करोड़ चाहिए, जैसे मैंने बोला आई डोंट ओनली 5 करोड़ इन माय लाइफ एट 12, but maybe universe has planned to give me 1,000 crores. I don't know, because universe is abundance. Okay, so क्या सोच रहे हो आप? Universe may not give you things when you want it to give you. Suppose if you want in the eventually the like obviously you have to work hard and all, like universe is not going to give you if you sleep all day, universe will give you, that's not possible, of course. Universe will not give you at that time. Suppose if you want in 5 years to come, you want 5 crores, maybe you won't get that. So maybe in 10 years to come, maybe you can get, just give a random example, you can get 20-30 crores, which you would not have anticipated. And that's true actually. Like you feel that life is being unfair to you at that point of time. Like maybe you have difficulties at that time. Forget about 5 crore, maybe at that time you must be struggling to have back. Just giving an example, not you, just an example. Bank balance of 5 lakhs even. So I mean, certain things universe gives you at a time, God gives you, but at a time you don't want, at a time you want, and God is not giving you. So I think God is kind of preparing you, universe is kind of preparing you to be as capable to handle those money. So that also happens like at that time. Like, I mean, So point I'm trying to make is that मैंने अगर इंटेंशन डाला है कि मुझे इतना कुछ चाहिए, ये मेरे को हेल्थ चाहिए, ये मेरे को वेल्थ चाहिए, ये रिलेशनशिप चाहिए, if I just put an intention to the universe that this is what I really want, now जब जिंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा होता है, something untowards happens, something different happens, we have a breakdown in your finances or relationships or anything else, what we say to ourselves, maybe मुझे इतना नहीं दे सकता universe, maybe मेरे को इतना किस्मत में नहीं है, maybe universe will give at his time, but आपको क्या पता जो आपने इंटेंशन डाला, क्या पता यूनिवर्स आपको उसके लिए प्रिपेयर कर रहा होगा, क्या पता उसको बना, आपने एक ऑर्डर किया है बुफे में जाके, रेस्टोरेंट में जाकर, यू हैव ऑर्डर्ड अ इटालियन डिश एंड इट टेक्स टाइम टू बिल्ड दैट, क्रिएट दैट इटालियन डिश, बनाने में टाइम लगता है ना, लेकिन आपको लगता है कि यार ये तो हो नहीं रहा, यू गेट इम्पेशेंट, यू गेट हंग्री, यू गेट अपसेट, everybody is getting their own dishes, you have not got it, then what you will say, maybe in my kismat, in my divine, in my destiny, it is not written like that. But who is saying that? Your conversation. Universe has abundance to give. So point I'm trying to make is, whatever belief that stops us to accomplish. I actually want to share one thing. A long time back, was 20 years back, I was attending one of the prayer meeting. उसमें किसी ने बोला कि हम बोलते हैं भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, भगवान मुझे ये दे दो. सो भगवान प्रकट होकर बोलता है कि भाई तेरे को मैंने हाथ दिया, तेरे को मैंने दिमाग दिया, तेरे को मैंने कान दिया, तेरे को मैंने हार्ट दे दिया, तेरे को मैंने सोचने समझने की शक्ति दे दी, तो मुझसे क्यों मांग रहा है? Go ahead and do it. बता दो. There was a conversation about free will and destiny also. We talked about it later. हमने पहले भी किया. लेकिन consider universe will follow what you do and what you ask and what you believe, and universe will give तथास्तु. वो बोलेगा हाँ यही दे दो, क्योंकि आपका जो बिलीफ है उसके हिसाब से आपके प्रिपरेशन है, आपका थॉट प्रोसेस है, आपको वो दे रहा है. यूनिवर्स ने आपको दे दिया कि आप जो सोचने वाले हो, जो आपके विचार करने वाले, वैसा ही मैं देने वाला हूँ. यूनिवर्स ने कंसिडर आपने ऐसा किया. फिर हम क्या बोलते हैं, सर जो आपको देना आप दे दो. अगर वो फीलिंग है, इफ दैट इज अ फीलिंग ऑफ सरेंडर, ऑफ कोर्स दैट इज अ ह्यूज फीलिंग ऑफ सरेंडर, बट इज इट अ स्पिरिचुअल बाईपास और इज इट अ रियल सरेंडर? We have to be honest with ourselves, right? We would not like to have spiritual conversations, to not to do contemplation, not to really ask from universe what you really deserve. So what can stop us to get what we really want to get us in life, in owning our life? Now let's focus the conversation in owning our life. हमारी owning our life में क्या चीजें हैं? This is what I really want, specific thing. Specifically बताना पड़ेगा यूनिवर्स को, ये मुझे specifically चाहिए. क्योंकि आप बोलते हो कि मुझे
ट्रिगर नहीं होना माइंड में, और हमने बिल्कुल वो स्पेसिफिक नहीं होने वाला। स्पेसिफिक बताइए एग्जैक्टली क्या फिजिकल मेंटल स्पेस में क्या होना चाहिए, मेजर कर सकते हो क्या आप? फिर जो यूनिवर्स देगा वो बड़ा देगा, मुझे नहीं पता। क्या पता आपको, आप बोल रहे हो कि मेरे को ट्रिगर नहीं होना, क्या पता वो आपको कल ऐसी सिचुएशन दे दे कि यार हाँ आप ट्रिगर नहीं हो सकते, आप हो सकता है 5 साल की बात कर रहे हो, आपको कल ही दे सकता है वो सिचुएशन। ट्रांसफॉर्मेशन कैन हैपन इन अ सेकंड, हु नोज। बट इफ यू क्लियरली स्पेसिफाई दिस इज व्हाट आई रियली वांट इन माय लाइफ, then you start working on it in the process. First, what can stop you to own your life is, and which is what is an obstacle, is your own belief system, is your own perception, is your own experiences about life. आपने जो समझा है लाइफ के बारे में, वो आपको स्टॉप कर सकता है, वो आपको ट्रिगर भी कर सकता है, आपको स्टॉप भी कर सकता है। उसके बाद हर रोज की प्रैक्टिसेस कौन सी होनी चाहिए? दिस इज वेयर इन नेक्स्ट 10 minutes आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट। What would be your daily practices to accomplish what you intend to accomplish? What could be your daily practice? So what really inspires me, जो मैं practice करता हूँ, I'm going to share that. What it could be a daily practice? I practice savers, SAVERS, as a part of my accomplishment, as a part of my journey to own my life. क्योंकि जब मैं own my life की journey पे जाता हूँ, वो अपने आप में मुझे energy देता है। वो होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, but the journey is beautiful. Because the moment I believe that yes, I can own my life, gives me a very energetic feeling. So what is the daily practice that I do to ensure that I'm on the path? The very first thing is S for silence. I ensure that I do everyday silence for minimum 25 minutes when I get up in the morning. मैं अपने immediately बेड के ऊपर से उठता नहीं हूँ, मैं पहले 10 मिनट 15 मिनट साइलेंस में रहता हूँ, कॉन्टेम्पलेट करता हूँ। आई जस्ट इसको हम प्रेयर भी बोल सकते हैं, मेडिटेशन भी बोल सकते हैं, बट आई एंश्योर दैट आई एम इन अ प्लेस कॉल्ड साइलेंस। मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, साइलेंस में रहता हूँ। तो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेरी मेडिटेशन और साइलेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सेवर्स, मैंने जो लिया है फॉर्मूला, ये टॉप 1% सक्सेसफुल लोगों के साथ लिया, whether they are spiritual successful or financial successful, मैंने वहां से फॉर्मूला लिया। दिस इज अ हैबिट ऑफ सम सक्सेसफुल पीपल। A stands for affirming how I want my day to। कहते हैं कि अगर आपने, if you have owned your day, you are owning your day every day, then you are owning your life to eventually. So if you are affirming what you really want in your particular day, मैं दिन ऐसा चाहता हूँ, मैं अपने ऑफिस में जाना चाहता हूँ तो ऐसे मेरे बॉस होंगे, दिस इज ऑल आई वांट। मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाएं, मैं जो भी मैंने डिसाइड किया है। मैं चाहता हूँ कि एवरीथिंग हैपेंस वेरी पीसफुली एंड जॉयफुली। मैं चाहता हूँ कि मेरे को इतना, मेरे पास पैसा आ जाए, इतना मैं अगर स्टॉक मार्केट में कर रहा हूँ तो इतना पैसा मैं पाऊँ। तो स्पेसिफिकली मैंने अफर्म किया, दैट इज कॉल्ड ए। एंड देन व्हेन यू अफर्म इट, देन यू विजुअलाइज इट ऑल्सो, लाइक रियली लिख करके भी बोला और अपने विजुअलाइज भी किया। यू ऑल्सो हैव विजुअलाइज्ड, yeah, and visualize as if that is really happening to you. Feel it and visualize it. It's like a story that you are creating in your mind. This is something I really, really want to own my day. That is, I'm visualizing that. And then E stands for exercising. Now, if you don't move your body, if you don't use your body, because your body is an extensive tool for accomplishing what you want to accomplish in your life. And if it is health, if it is wealth, if it is finances, if it is relationship, your body becomes an extensive tool. Because if you are highly energetic, you can accomplish what you want to accomplish. So give some time to energize yourself, to exercise anything, make some movement, release some, hormones, release some chemicals in your body, which are good chemicals, by doing some little bit of exercises. Do some push-ups if you want, or do some breathing exercise. So E stands for exercise. I ensure कि मैं कुछ भी करूं 2 मिनट या 5 मिनट की मैं breathing या मैं कोई walking या कोई running exercise जरूर करता हूं। And when you come back from exercise, then your mind starts working in a different direction. Some new thoughts are going to come up for you, for sure, when you release certain chemicals. That is called R. R stands for you read something and then you write something. Read and script.
S stands for scribbing. R stands for read. Maybe you read something, your mind will say, I want to read this article, I want to read this book for about 20 pages. And then you scribe. You also write something, your insights, that what have you got when you have done savers. So this is a practice, this is the mindful practice that I do in my life. And I'm really committed to really owning my life in the next 3 to 4 years, where I'm not worrying about my finances. I will actually have my own centers, spiritual centers across India and world. This is what I mean owning my life without worrying about too much. When I want to go out and explore the world, I'm not worrying about my money. So this is what my definition of owning my life. Your definition will be different. And what can stop me is my own fears and insecurities, which I'm really consistently looking at it by doing savers. जब मैं savers करता हूँ तो मुझे अपने fears नजर आते हैं. I get my present my fears, and I deal with those fears. I have relationship challenges. I deal with those relationship challenges as I progress, because I have faith in my mind that is, if I put seed in the soil, that I get it, that I will definitely get it. So whatever is happening around me, difficult situations, circumstances, is only and only preparing me to own my life. So this is the practice that I do. What could be yours? What could be your practices? You have to check out. I've got give you a framework of owning your life. First, visualize. First, be very sure what do you really want in your life. That is the first step. And second is why you want it. And the third step is where are the people? Who are the people around you? कौन होंगे आपके आसपास? कौन नजर आ रहे होंगे? Fourth is what can stop you, and the last part is what can you do daily and to own your day and then eventually own your life. I do savers, you can do yours. So with this note, it's already 8:50. I want to end this session. Anybody would like to share or comment or give your thoughts or takeaways, because I've been speaking for about 50 minutes. If you want to share your thoughts, you can go ahead. Most welcome. My battery is also dying. Yeah, please go ahead. Okay, Vinay. Even I'm just stopping the live stream for a moment.